L5S1. Done. Hi everyone, welcome to today's video. ये जो पेशेंट है शायद अपना पहले जो एक वीडियो था उनका गर्दन दर्द, तो अभी उनका कमर दर्द के लिए आए हैं एंड वी विल ट्राई टू असेस एंड द प्रॉब्लम एंड उसके लिए हम ट्रीट करेंगे. तो आपका ये कमर का दर्द कितना साल से भुगत रहे हैं? सेम लाइक 1.5 years के आसपास. तो अगर इतना दिन में क्या क्या ट्रीटमेंट किया है आपने? दवा या फिजियोथेरेपी कुछ किए? फिजियोथेरेपी किया था, उसके अच्छा, बाद फिजिशियन से भी दिखाया ओके दवा भी लिए, पेन किलर दवा दिए, कम बहुत ज़्यादा खा, बट उस टाइम कम हो जाता था, फिर बंद कर रहे? खाने के बाद कम होता है, उसके बाद फिर होता है. अच्छा, तो अभी आपका अगर हम पूछ ले इंटेंसिटी कितना है? अगर 0 नो पेन, कुछ भी नहीं, 10 एकदम सबसे ज़्यादा पेन, कितना नंबर देंगे कमर में? 10 ही देंगे. आपका पैर में तो जाता नहीं है, कमर में ही रहता है, ऐसा है. थोड़ा सा दर्शकों को दिखाइए कहाँ पे पेन है. प्लीज टेक अ लुक एज टू वेयर शी हैज अ पेन प्रॉब्लम. तो यहाँ पे है, राइट ओवर हियर. सो वेयर शी इज एक्चुअली शोइंग, मैं थोड़ा सा फोल्ड करता हूँ ताकि देखें. वेयर शी इज शोइंग राइट ओवर हियर इज L5S1 जंक्शन, यानी जो लंबर स्पाइन होता है, लंबर स्पाइन और टेल बोन का जंक्शन में उनका दर्द दिखा रहे हैं और थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाता है जब ज्यादा बढ़ जाता है. दैट मीन्स शी हैज लंबर स्पाइन डिसफंक्शन, possibly because of work pressure. She is a nurse, so she has to take a lot of load, like maybe 24-hour 48-hour shifts, and that might have caused a little bit of an issue in the lumbar spine. So let's check how we can treat and get this thing done with. So as you all know, one of my favorite go-to is hypervolt hyperice. I try to relax the area so that it is easy for me to do chiropractic adjustments. That's exactly what I am trying to do right now over here. So right now I am going over the sacrum and then in the lumbar spine area. Remember, she has L5S1 dysfunction and a little bit of lumbar spine misalignment too. Just so that you are aware of, उनका जो प्रॉब्लम है, दिस इज बेसिकली द टेल बोन एंड दिस इज द लंबर 5 वर्टिब्रे. उनका दर्द यहाँ ये बीचों बीच से शुरू होता है एंड इट गोज अप द लंबर स्पाइन चेन. सो माई गेस इज there is some kind of dysfunction, misalignments going on in this segment. We will do a little bit of segmental derotation, clear these facet joints and realign them, and hopefully we will also retrain these muscles over here and they will be able to stabilize this part of the segment. So we do not want her to get this thing happen, slip disc या disc bulge. तो ये prevent करने के लिए हम लोग treat करेंगे and I am pretty certain that she will be fine. So अगर हम यहाँ पे रखें, so I am treating right over here, यानी right over this section I will be doing my chiropractic adjustments. Sacral rocking हो गया. We will do a little bit of sacral shear in the inferior aspect. All right, we are good. छत की तरफ देखिए. L5S1. You should have heard this. Again L5S1 on the other side. Now you have for sure heard it. Right knee, tibiofibular, done. Talus, cuboids, nav, and metatarsals, IPs. Done. On the other side, same thing. Tib fib, talus, cuboid, navicular I mean, and then जो toes का metatarsals, tarsal bones है, और rather metatarsal bones है, वो सब. और एक बार. Done. Relax. खड़ा हो जाइए. पीछे, सर के पीछे हाथ. Okay, close the elbow. Relax. Done. Cross. Okay, पैर थोड़ा सा आगे. हाँ. Relax. Done. Okay, relax.
और एक बार. This was my trial tug. Done. Okay. दो बार लंबा सांस. All right, we are doing kind of lower thoracic, upper lumbar, D12L1 to be more specific. पकड़ लीजिए घुटना से. डन. और हमको बताइए क्या कैसे लग रहा है. एनी पेन? नो पेन. पीछे जाइए. एनी पेन? फैंटास्टिक. सो पहले आप बोले थे 10 में से 10 दर्द है. अभी कितना दर्द है 10 में? अभी 0 है. अच्छा ठीक है. सो आप दर्शकों सुन लिए. She has no pain at all right now. So again, she is young. She is otherwise completely healthy. It's only because of postural problem that she is having this kind of low back pain. And if you have seen the part 1 video, with the link of that video will be in that I button on my upper on the top of my finger. She had neck pain over there, so I think it's more posture and work or related. We have given her all the customized corrective postural exercise program and also changed her work ergonomics. So thank you so much for coming to Kolkata and getting treated by us. So please बेझिझक आप फोन कर सकते हैं. Our contact number is in the description. And please do like, share and subscribe the video. Until next time, stay fit, stay healthy. Jai Hind. Thank you.